Engineering and Technology, Patiala. He is an assistant professor there. So he will be taking up that plenary session, Dr. Rahul Upadhyay. Then another session will be there for paper presentation. This will start from 3:15 p.m. up to 4:15 p.m. So uh, as many as four papers will be published during this hour, and the last plenary session will be held from 5 p.m. to 6 p.m. and it will be conducted by Honorable Mr. Sanket Vaidya. So in all, four plenary sessions will be there today. And as I've told you that the first session will be taken, first plenary session will be taken up by Honorable Mr. Naval Neeraj Singh, sir, who is a senior manager with HSEF. He will be joining us as soon as possible. Ladies and gentlemen, I would like to tell you that this is the second day of the conference, which is being held under the aegis of the Global Nature Care Centers group of institutions. And the two departments which are responsible for holding this conference are the IT and the CS departments. And this particular conference, dear students, is possible because of the organizing of the the conference committee members. Okay, Chief Patron Honorable Shri Saurabh Baderia has really given consent to this conference, and his cooperation, his encouragement has been really very helpful for us to make this conference possible. Patron has been Honorable Dr. Rajiv Khatri, sir, who is the director of the Global Nature Care Centers group of institutions. He has also guided us, helped us, and cooperated us in every possible way. So his contribution is also very valuable for us. Then the third one is the organizing secretary, Honorable Dr. Sumit Nema, sir, who is present here in the meeting, head of the department CSE, Global Nature Care Centers Group of Institutions, Jabalpur. He is also looking after so many affairs concerned with this conference to make it successful. And another member of the conference committee is Honorable Professor Vandana Pathak, madam, who is the head of the department IIT-CNSGI, means Global Nature Care Centers Group of Institutions, Jabalpur. He is the head of the department IT and the coordinator of this two-day conference. Then, ladies and gentlemen, yesterday I had told you a couple of times regarding the advisory committee. Very quickly, I would like to tell you about the advisory committee. These are the officials, the professors, assistant professors, and different other officials who have been extending their support from outside for the organization of this conference. And the members are Dr. A.K. Sharma, sir, Principal JEC Jabalpur, Dr. Prabhat Patel, sir, Professor, Department of EC, RGPV Bhopal, Dr. Prashant Jain, sir, Head of the Department of EC, Jabalpur, Dr. Bharat Mishra, Professor from Mahatma Gandhi Chakraborty University, Dr. Sanjay Silakari, Professor, he is Department of CSE, RGPV Bhopal, then Dr. Ratish Agrawal, Professor, Department of Information Technology, RGPV Bhopal, Dr. Mamta Lambert, Professor, Department of MCA, JEC, Jabalpur, Dr. A.K. Nema, Professor, BHU, Varanasi, Dr. Vinod Kapse, Director, NIET, Greater Noida, Dr. Jitendra Singh Thakur, Head of the Department of CS, JEC Jabalpur, Dr. A.K. Pandey, Professor, Mahatma Gandhi Chitrakoot University, and Professor Lavleen K. Pabla, Head of the Department IT, JEC Jabalpur. So these are the members from the advisory committee who have given their valuable pieces of information, valuable support and suggestions, recommendations, etc., so that this two-day national conference is successful. We are waiting for Honorable Mr. Naval Neeraj Singh, sir, to join us. As soon as he does, his plenary session will be starting. But before they start to that plenary session, I will read out a small introduction about him. The
brief introduction, brief profile is available with me. Are you comfortable, students, in your homes? Are you okay? Is everything fine about you? I hope, students, conference has been, yeah, thanks for the thumbs up. I do suppose that the conference has been really supportive, helpful, and you've got the opportunity of learning so many things out of this conference. So the first plenary session is about to begin. I do suppose that Honorable Mr. Naval Neeraj Singh, sir, is very much available here, very much present with us. And if he gives me his consent, I will go ahead with the reading out of his small introduction available with me. Good morning, sir. Please go ahead with the session, sir. Okay, yeah, thanks very much, sir. Thanks very much for your green signal. Ladies and gentlemen, this is the formal start to the second day of the two-day national conference being held by the Global Nature Care Centers Group of Institutions. And as I said, that departments are responsible for its organization. Yeah, definitely, yes. Yep. Thanks for the applause, Sumit sir. And the subject of this conference is unprecedented and advanced concepts of computer vision. And ladies and gentlemen, let me introduce Honorable Mr. Naval Neeraj Singh sir to you. He is BE Honors Mechanical Engineering, ladies and gentlemen. He has done PG in Thermal Power Plant Engineering from National Power Training Institute, Ministry of Power, Government of India. Ladies and gentlemen, Honorable Mr. Naval Neeraj Singh sir is a postgraduate in Industrial Safety Management, pursuing from Central Labour Institute under Ministry of Labour, Government of India. Ladies and gentlemen, he is a PG in Human Resource Management. Ladies and gentlemen, Honorable Mr. Naval Neeraj Singh sir is working as a senior manager with HSEF at SR Power Gujarat Limited, an SR Group company. Ladies and gentlemen, Honorable Mr. Naval Neeraj Singh sir has a total experience of approximately 17 years working in various departments of power plant, project development, planning, corporate affairs, legal, human resources, executive assistant to MD, and industrial safety. And it's really our privilege and honor to have his company over here. He is about to start his presentation. I would like to request him formally, sir, please go ahead with your presentation so that these students can get a lot of benefits out of it. Please go ahead, sir. Thank you, Prasanna sir. Thanks a lot. Students, hope you all are ready and am I audible at your end? I need answers in your chat box. Yes. The chat box is visible to me. So let me talk about this session. Hope I am audible clearly, Sumit sir. Yeah, your voice is clear. It is very much audible. Yeah. You go ahead. Sir. I am just proceeding with the session. Sure. Thank you all, especially the organizers, Global Institute of Engineering and Management, Department of Computer Science and Engineering, Dr. Sumit Nema, all other faculty members, and the management and students. So I'll just brief you about my connection with Jabalpur. So just I'll take around 1 minute. Friends, I have done my engineering from Oriental College in the year 2003. And after that, I joined Gyan Ganga Institute of Technology and Sciences at Jabalpur. And I was there as a faculty of mechanical department for 3 years. And then I moved towards industry for pursuing my higher studies. And there I get into industry. So I have a good connection at Jabalpur with all my dear friends
Dr. Sumit Nema, Dr. Swapnil Nema, Dr. Rohit Dubey, Mr. Anil Dubey. तो वो सारे फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पे. सो अच्छा लग रहा है फिर से कनेक्ट होके जबलपुर से आफ्टर 16 years, 17 years. So I left Jabalpur in the year 2006. So during my industrial tenure, I had been with the SR Group company after pursuing my PG in power plant. And then I had a lot of exposure with respect to various departments, and I handled the Greenfield project at Madhya Pradesh, our SR Power MP Limited. And I was there for 11 years, further moved towards the location. And then there I have been given responsibility of industrial health and safety. So, as a health safety and environment professional, the topic of the seminar is unprecedented and advanced concepts of computer vision. So, hope you all have read a lot of things about the advancement in the technology, in computer technology, being a computer professional. But the flip side of the technology, which we rarely see. So today we will give you, I'll try to give you some insights with respect to the flip side of the technology, which usually people do not know as a professional. And during our engineering studies also, we do not study this particular field. So I'll try to give you some flip side of the technology. So I'm trying to share my PPT. Just let me know whether this is visible to you all or not. Is it visible to you? Yeah, it is visible. Yeah, the slide is visible to everybody. So today we will focus on certain things which as a computer professional do not know. So we'll talk about the flip side of the computer technology. You know something, everything you don't know is something you can always learn. So my dear students, today's session will be a very different session, which will be focusing on the health and safety aspects of computer professionals, or you can say the office goers. We all are white collar professionals. We all are into white collar jobs. That means office jobs, sitting for hours on the computer, not on the computer, but before the computer, seeing the computer, laptops, gadgets, mobiles. So we always talk about the advancement of technology, the plus sides of the technology, but we rarely see the other side of the coin. So I'll try to give you certain insights which will be definitely be useful for your future, because you being an engineering graduate after 1 or 2 years, maybe in the final year or second year, you are there right now. So you will be going to this particular field. Definitely you'll be managing office, you'll be working at office. So what all are hazards and risks we really expose ourselves because of this technological advancement. So you must be knowing, we have read a lot of things about science. Science is a useful servant, but a bad master. So I'm going ahead with the presentation. This is just a background I have prepared. So we'll be talking. Sir, this slide is visible to everyone?
Yes, Naval, it is visible. Yeah. So friends, we'll be talking about industrial safety aspects in IT, electronics, and service sector. Being a office goer, sitting at office, working for hours. So what all are the risks and hazards which we really expose and which we do not even think we are being exposed to such hazards which really be detrimental to our future health. So we'll just go through these certain definitions, which will be very useful in understanding the further slides of this particular topic. So, friends, hazard, you must be knowing this particular word, hazard. It's a danger or any risk, or we can say something which has potential to cause damage or injury. Injury to ourselves or damage to the property or damage to the environment. Now talking about health, state of being free from illness or injury. So our main aspects always we always want we should be very healthy. That means we should be free from all sort of illness and we should not be exposed to any unprecedented injury at our workplace or because of working at workplace. Safety. What is safety? It is the condition of being protected from or unlikely to cause danger, risk, or injury. That means safety means being safe from all sort of hazards, all sort of risks, injuries, or any such health hazards which may result by our work or by our doings. We will try to identify hazards with respect to computer professionals, IT industry, and electronic industry, and then we'll try to understand how this risk can be assessed. Risk assessment means the quantity of, the quantum of damage which these hazards can cause to the human body or to the environment or to the property. This is known as risk assessment. So hazard means anything which can cause, which is dangerous and which can cause harm to human body, environment, or any property. So understanding the hazard first thing, then assessment of the risk means quantum of damage which this hazard can cause. Suppose एक गड्ढा है कहीं पे, वहां आप जा रहे हैं तो वो एक hazard है. It's a hazard. It's a danger which can cause injury. But कितनी इंजुरी होगी वो किस पर डिपेंड करेगा? वो गड्ढे का साइज क्या है, उसमें क्या भरा हुआ है, राइट? उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इंजुरी हो सकती है. सो दिस इज नोन एज रिस्क असेसमेंट. देन कम्स योर रिस्क कंट्रोल. जब हमको समझ में आ गया, when we understood what is hazard, we have assessed the risk, the quantum of damage which this hazard can cause, then we will try to apply control measures. Control measures means how this risk can be averted or avoided or reduced. So these are known as risk control measures. So in the occupational health and safety aspects for any professional, as you are being a computer professional, it's a planned system of working to prevent any illness or injury where you work by recognizing and identifying hazard, as I talked about it earlier, identifying hazards and risk. Okay, so health and safety procedure is the responsibility of all the persons in the computer and technology industries. You must really identify the hazards where you are working and decide how dangerous they are. Eliminate the hazard and modify the risk that it presents. First is spot the hazard. पहले आपको वो नजर चाहिए जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि what are all those things which can really cause damage to ourselves
or to the environment or to the property. आपके आसपास कहीं भी हो सकता है, heavy noise हो सकता है, electrical hazards हो सकते हैं, any disordered material हो सकता है, right? ये जनरल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम स्लोली मूव करेंगे टुवर्ड्स फ्लिप साइड ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कि वहाँ क्या हजार्ड्स हैं जो कि हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। So we'll try to give you that vision. Okay, we'll try to give you that vision by which you can really realize and identify those hazards. Then, which I talked to you earlier, assessing the risk. Then, control measures. After assessing the risk, we will apply control measures. We'll change certain aspects and to be ourselves safe and make our environment safe. Common hazards encountered by computer technicians, operators, or computer professionals, right? So what are those hazards? These may be physical hazards. Anywhere in the lab, in the office, wherever cables are running throughout across the floors, so there are hazards of tripping, falling, hurting yourself, okay? In case of any cable being running across the floor. Then wherever such things are there, we have to really apply the sign, that is danger sign, wet floors. These are physical hazards. Cables laying, okay. Then various physical hazards. After the physical hazards, we'll talk about mechanical hazards. So while working on electronic equipments, computer equipments, you must know how to really handle those equipments safely with respect to electrical aspect, electronic aspect, static charge aspect, okay, so that you will never be hurt, because there are always moving components. Mechanical hazards means hazards which may arise because of moving things or sharp objects or high temperature components. Then there are chemical hazards as well. So various chemicals being used for these, preparing these or manufacturing these electronic gadgets, computer equipments, okay. So you must be aware of all those chemicals which we are using for manufacturing these equipments. There are printers, there are inks which may be hazardous, right? Cartridges, how to really dispose these electronic waste. You must be aware, government of India has enacted e-waste rules 2016. How these electronic waste have to be disposed. Why this requirement has come up? Because such things may be hazardous and injurious to human health as well as to environment. Then there are various hazards with respect to or risk with respect to electrical aspects, because we'll be using electricity at our labs, at our offices, at our servers, everywhere. So you must be aware that at what sort of level we are operating, that is voltage level. So to 3.3 to 25 volts is harmless, but at our power supply you will find the line voltage which is lethal. Lethal means which can really be dangerous, which can cause death, that is 220 volts. So you must be always aware of these precautions, that is you must always ground or discharge yourself before touching any part of the computer, just to avoid static charge hazard. You must be careful with the tools that may cause short circuit. Do not overcome alone. There is someone who can really take care of you in case of accidents or emergencies. Always pull the cable connector on the handle and not hold on the cable itself. So these are certain precautions. These are office precautions, lab precautions. You must be knowing all these things. Then there are very important guidelines with respect to fire safety, because with respect to any lab, any work area, any office space,
there is great risk of fire. So you must be aware of the location of fire extinguishers. How a particular type of fire can be really extinguished? Where are the sources of electrical short circuits? Those needs to be plugged in. Okay, where are the exit routes in case of emergencies? Emergency routes are identified, displayed, and known to everybody. Which are the emergency services and contact numbers? So by this you must have got a little aspect with respect to technology being a useful servant but a dangerous master. Friends, another aspect we talked about earlier about workplace safety. Now we will focus our next presentation part on human health aspects with respect to technology. So this is computer ergonomics. So this word I don't know whether you have heard or not, but we will be having about just a little about computer ergonomics. Okay, so not make you bored right now. So I'm switching towards video part of the lecture. I have selected few videos, very good videos from YouTube to give you really aspects of health hazards which may cause due to computer and these advanced technologies. I'm sharing the first video with you. Sir, just let me know whether voice is available to you or not. Yeah, sure. Yeah, it is available. Here we are going to discuss what is computer ergonomics and its importance. But before we move to talking about it, let me ask you a few questions about the topic. You spend about 4 or more hours on a computer. Do you experience the following? Have you ever experienced muscle soreness or pain in certain areas such as your back, arms, or shoulders? Have you ever experienced pain in your neck or fingers? Have you ever experienced dry eyes when consistently looking at the screen? Do you get headaches? If you said no to any of these questions, congratulations, you are practicing good computer ergonomics. If you answered yes to any of the questions, then I suggest that we explore computer ergonomics and how it can be a benefit or even enhance your personal life. First, let us explore what is computer ergonomics. Computer ergonomics is setting up the computer and workspace to fit the user and their work needs to minimize physical stress. Why is it so useful or important? Working for a prolonged period of time can be harmful to the body and overall health. Computer ergonomics helps to alleviate certain conditions that is a result from using a computer for a long period of time. Now let us talk about some of the benefits of computer ergonomics. First, it can improve your productivity. It can improve your posture. And last, it can improve your energy. The overall goal in computer ergonomics is for the person to be comfortable. In the next section, we are going to discuss key factors. So this is just brief about computer ergonomics.
So we'll try to relate things further in the next video, and then we will switch over to our presentation part. So we'll be having a mix of slides, mix of videos, so that things can be comfortably absorbed by you all professionals. There are certain use of internet, I suppose. Okay, we'll just switch over to the presentation part. So, all the slides are visible to everyone. Okay. So what we just seen in the video, that is ergonomics. That is the science of designing the job equipment of place to fit the worker in an effort to reduce fatigue and discomfort or injury. That means ergonomics, it's a science of designing the workplace wherein the fatigue to the human body or any discomfort or any injury can be averted or avoided. So ergonomically designed furniture, designed workplace, environment, everything, if we provide to ourselves or to the working professionals, their productivity will definitely be at on the higher side. So now we will be going towards the main part of our presentation. That means the health aspects or the dangerous aspects of technology. That means continuous, consistent exposure to the screen, computer screen, or any mobile screen, which may cause computer vision syndrome, as CVS. It is eye strain, and it can be resulted because of long lengthy work on computer. You must have experienced some sort of eyes discomfort and some vision problems also whenever you consistently and for long hours you work on digital screens. So the symptoms may be the sore, tired, burning, itchy eyes, blurred, double vision. So how can we prevent CVS, that is computer vision syndromes? You must always take 5 to 10 minutes break during long computer sessions. Say around, if the session is around for 40 hours, 40 minutes you want to work, then just take breaks of after 40 minutes, just take for 5-10 minutes, just roam across the office and change your vision. Okay, seeing at the long distance, then seeing at the nearer distance. You may use glare or reflections, anti-glare, anti-reflection screens on the computer. You must adjust the contrast and brightness of the computer screen. By these precautions, you can really reduce the risk of
computer vision syndromes. So we have tried to just summarize which we can by these things we can really avoid the computer vision syndromes to appear in the body of human professionals while working on the computers. So you must have regular eye checkups within a year or 6 months. Definitely eye exercises. You must be knowing proper lighting, glare reduction, and distance. It's very, very important. Your screen should be at a proper distance. Monitor cleaning, then font sizing. Usually people I have seen, they type or they see very small fonts. What is the requirement? You must increase the font size, and to make your screen properly visible from distant, try to make the screen distant from yourself. Okay. Frequent blinking is very, very important for lubrication of eyes. You must be knowing that consistent long-term exposure of eyes without blinking may cause dryness in your eyes. So blinking is very, very important. You can use water, sprinkle water on your eyes, just take a break for 10-20 minutes. After working on 50 minutes, say suppose 50 minutes you have worked on computer, just take 5 minutes break. Just sit on the table wherever you are working, on the chair, just close your eyes, or you can sprinkle water on your eyes. Okay. Glasses, with the specs which you are wearing, you must clean those specs. It's very, very important. This 20-20 rule is very, very important for any computer professionals. That is 20 minutes, 20 seconds break, and 20 feet look at a 20 feet up. That means every 20 minutes you have to take 20-second break, blink your eyes, and adjust your vision at a far distance, that is 20 feet, and then nearest distance. So if you are acclimatized or you maintain this habit of all these things, you will really avoid the risk of having computer vision syndrome in your future. So this is all about computer vision syndrome, which we have discussed, and which is highlighted in these slides. Then next topic, I'll try to run this video if it's ready. Okay. Welcome to the Explaining Computers YouTube channel. Here I post videos on all kinds of computing topics, ranging from storage devices to building your own PC, operating systems to application programs, robots to artificial intelligence, and lots of content on the Raspberry Pi and other single-board computers. There's also the odd wacky experiment, the occasional location report, and explanations of hot computing topics, including big data and quantum computing. New videos upload every Sunday, but to make sure you don't miss out on your weekly computing fix, please press the subscribe button and also click on the notification bell so you're always notified about the latest video. Then And while you're at it, yes, why not nip on over to my Explaining the Future channel and subscribe? I don't know from where this voice is coming. I think one video is open actually. हाँ, I'm not able to locate that video. कहीं दिख नहीं रहा है वो वीडियो कहाँ ओपन है. मैंने सारे टैब बंद कर दिए हैं. एक YouTube खुला हुआ है, उसको भी बंद कर दो शायद. कहाँ पे सर, कहाँ पे? एक YouTube का टैब दिख रहा है यहाँ पर, यही वाला. ये तो मैंने अभी जस्ट प्लेलिस्ट खोली है मेरी. अच्छा. अभी आई एम ट्राइंग टू ओपन दैट वीडियो अगेन. शायद बैंडविड्थ का कुछ इश्यू है प्रॉब्ली.
connected. We try to run your videos because I think videos will be more and more interactive, and you will get a better understanding of the subject, because it's a very different subject. Health and safety of IT professionals or computer professionals. Network is weak actually, Naval. Yeah, I think Now it's it's visible to everyone. It is audible. Yeah, it's visible. Welcome to another video from explainingcomputers.com. This time I'm going to talk about computing-related health and safety. This is a subject that should concern us all, as the long-term impact of widespread computing use is still relatively unknown. In theory, when used appropriately in moderation, computers should have no impact on most people's health. However, in practice, intensive computer use can result in additional and long-term health issues. The most common complaints are upper limb disorders, eye problems, headaches, and stress or fatigue. Upper limb disorders, such as repetitive injuries or RSI, may affect the fingers, hands, arms, or shoulders, and can result in mild aches and pains through to chronic tissue or muscular complaints. Such health problems can result from prolonged high-speed typing or the intensive use of a mouse. They can also arise from a poor working posture. Whether or not computer use with long-term eye problems remains a matter of debate. However, short-term computer-related eye problems are undeniable. These can be associated with sore eyes, headaches, blurred or softened vision, and sometimes a residual afterimage experienced for short periods. Excessive stress and fatigue are also commonly reported. These result from long periods of dexterous activity and visual concentration. Some people also find it uncomfortable to have to conform to software or hardware that constrains how they work, or which regularly crashes, or causes them to constantly wait. Many steps can and should be taken to reduce the health risks of long-term or habitual computer use. Specifically, measures need to be taken to ensure the screen image is clear, stable, and free from glare or reflections. The keyboard should then be positioned with sufficient space to support the wrists. Many people also find that a wrist support makes typing more comfortable, with the gel variety being the most favoured. To prevent long-term mouse usage resulting in finger or upper limb problems, breaks from intensive rodent activity are highly advised. Other pointing devices, such as tablets, may also ease mouse-related RSI problems. The work chair should allow the attainment of a comfortable working position, and to facilitate this should feature an adjustable seat and back height and tilt. The chair should be adjusted so that the user's forearms are roughly horizontal, with all but the largest displays set with the top of the screen at eye level. A footrest should also be provided upon request. Alongside these physical arrangements, regular changes in working position, as well as periods of rest from the screen, are essential to avoid computing-related health disorders. The provision by employers of eyesight tests and any required spectacles
is also mandatory for habitual display screen users across Europe, with training and risk reduction information also having to be supplied. European legislation also requires regular workstation risk assessments. Nobody has yet spent a normal lifetime using a computer, both at work and in the home. The younger you are, the more important it therefore is that you try and use a computer as safely as possible. For more information, look in the DSE rate. So you just seen few of the risks associated or hazards associated with computer technology, that is computer vision syndromes. हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे. तो आंखों में कोई भी अगर तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन long hours on the computer, on screen, or you are watching TV also, or you are on mobile also, then also there is always risk of computer vision syndrome. So you must have you must know exercises, you must know how to take real breaks, and various exercises, breaks, and your posture, computer ergonomics, the workplace ergonomics. That is how you are really placing yourself while working for long hours on the computers. Okay, so we'll be proceeding further on our particular topic. Next next risk after going through is repetitive strain injury, that is RSI. Okay, so the results because of repetitive postures, bad postures, and lack of rest while you work on computers. So there are two types of RSIs, that is repetitive strain injuries. One is tendonitis, that is it occurs when tendon is inflamed, that is सूजन आना by excess or repetitive motion or stress on the tendon. Tendon means ये जो नस होती हैं आपकी, नस के अंदर का जो पार्ट है भी हम आगे देखेंगे, इनको टेंडम्स बोलते हैं. तो उनके अंदर में इन्फ्लेमेशन आना मतलब सूजन आ जाना. ओके, another RSI is carpal tunnel syndrome, that is CTS. It is caused by repetitive or forceful bending of wrist. ये आपकी जो कोहनी होती है, इस कोहनी के बेंड करने से जो इश्यूज आते हैं, हम कंटिन्यूअसली माउस को ऐसे मूव कर रहे हैं फॉर आवर्स, वी आर मूविंग फॉर आवर्स, वी आर कीपिंग अवर दीज हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर कीबोर्ड एरिया. तो इसके कारण से ये जो उंगली हैं आपकी, फिंगर्स हैं, इनमें कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, जो कि शायद आप लोग ने सुना नहीं होगा, बट अभी हम फोटोज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है. So how important is to take frequent breaks while working on long computer sessions with respect to your eyes we have seen. Now we'll see about our hands and arms. Okay. This is carpal tunnel syndrome. You can see these are tendons. This is tunnel. ये कोहनी, ये जो आपकी हाथ का ये जो पार्ट है, ये पार्ट. ओके, दिस इज टनल पार्ट. कार्पल, दीज आर कार्पल बोन्स. ये जो दोनों बोन्स हैं आपकी, ये कार्पल बोन्स बोलते हैं इनको. एंड देयर इज अ मीडियन नर्व. यहाँ से एक नर्व है, नर्व जो कि ब्रेन को जाती है स्पाइनल कोड से कनेक्ट होके. यही सारे सिग्नल्स इसको देती है, इस पूरे एरिया को. तो जब आप इस पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो आपको ये रिस्क है कार्पल टनल सिंड्रोम. ओके, सो एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम का, अगर चल गया तो. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट. आज के इस वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम यानी CTS के बारे में डिस्कस करेंगे.
इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सीटीएस कंडीशन क्या होती है, ये क्यों होती है और इस कंडीशन में क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि ये कंडीशन आपको है या नहीं, तो इसे चेक करने के लिए आप कौन-कौन से कंफर्मेटरी टेस्ट घर पर ही खुद कर सकते हैं। झंझनाहट और हाथ की मांसपेशियों में कमजोरी जैसा महसूस होता है, तो यकीनन आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिसे मीडियल नर्व कंप्रेशन भी कहते हैं। इन 3 सिम्टम्स के अलावा इस कंडीशन में पेशेंट को चीजों को ग्रिप करने में भी दिक्कत आती है। चीजें ग्रिप न बनने के कारण हाथ से छूटने लगती हैं। इस कंडीशन में दर्द रात के समय थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। दर्द जब ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट्स जनरली इस तरह से अपने हाथ को झटकने लगते हैं ताकि दर्द से थोड़ा सा आराम उन्हें मिल पाए। तो ये थे वो सिम्टम्स जो जनरली कार्पल टनल सिंड्रोम पेशेंट के साथ रहते हैं। अब जानते हैं कि ये दिक्कत कैसे होना शुरू होती है। हम सभी के हाथ में कलाई के पास एक टनल होती है, जो हाथ की इस टनल के नीचे से बहुत सारे मसल्स के टेंडन्स के साथ ही मीडियल नर्व भी पास होती है। ये मीडियल नर्व हमारी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। वहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये फिर हमारी बाजू में जाती है। यहाँ बाजू में पास होती है ताकि ये हैंड और फिंगर्स में मूवमेंट और सेंसेशन सप्लाई कर पाए। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से ये नर्व टनल के नीचे से पास होते समय प्रेशर के कारण दबने लगती है, और जैसे जैसे ये नर्व दबने लगती है वैसे वैसे सिम्टम्स भी इस कंडीशन में नजर आने लगते हैं। जो ये प्रेशर है कार्पल टनल में दबने लगती है, वो कई वजहों से हो सकता है, जैसे डायबिटीज। अगर आपकी शुगर हाई रहती है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। थायराइड डिसफंक्शन, अगर आपको थायराइड डिसफंक्शन है तो भी आपको ये दिख सकती है। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस के कारण बॉडी जरूरत से ज्यादा वाटर रिटेन हो जाती है, जब ब्रेस्ट को बार-बार ओवर एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा जाता है। क्योंकि इसके अलावा आपकी भी तब आपकी दर्द की वजह सीटीएस है, और ऐसा There are various tests which you can use just to know whether you are suffering from carpal tunnel syndrome or not. A tingling sort of sensation, numbness. There are various tests. This is Fenner test. अगर आप इस पोस्चर में ले पा रहे हैं अपनी बॉडी को तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करें। अगर आपको कार्पल टनल होगा तो यहाँ पे आप ये बेंड नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नर्व में और गर्दन में सर्वाइकल एरिया में होगा दर्द। इवन ये पोस्चर लेने में भी आपको तकलीफ होगी। इवन अगर आपको सर्वाइकल है तो भी ये इशू आएगा। तो यू मस्ट check your body, your health with respect to hands, your arms, your wrist, your eyes, complete posture, spine, whenever you work for long hours in front of the computers. ट्रीटमेंट है इसके। अगर इनिशियल केसेस हैं तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कैन रियली वर्क। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि फिर बाद में इसका जो ट्रीटमेंट है सीवियर केस में फिर वो होता है आपका सर्जरी। ओके, ये हमने देखा कार्पल टनल सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। देन वन इज नेक पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम नेक पेन इसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक पेन या टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, TNS। सो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम होता है जब आप कंटिन्यूसली मोबाइल को होल्ड करते हैं, मतलब मोबाइल को आपने ऐसे रखा हुआ है और आप ऐसे पकड़ के कंटिन्यूसली काम करते हैं। आप ऐसे कभी नहीं काम करते, काम करते। सो यू आर जस्ट गिविंग प्रेशर ऑन योर हेड। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट हेड रखने में हमारी
हेड के ऊपर कितना वेट आता है और जब पर्टिकुलर एंगल पे हम रखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो कितना वेट बढ़ जाता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट इज टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम हमने देखा। आप अब ये मैंने आपको आइडिया कोशिश करी है कि आपको ये समझ में आए कि हजार्ड्स क्या हैं। अब आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को नाम नोट कर लीजिए। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, लोअर बैक पेन्स, and then carpal tunnel syndrome, repetitive strain injury, and then comes your text neck syndrome, TNS. Now you can just see, you can just view this slide. Okay. At 0 degrees straight में अगर आप इस तरीके से मोबाइल देख रहे हैं तो it is 10 to 12 pounds. Okay. 15 डिग्री अगर आपने चेंज किया, मतलब स्लोली देखिए, अब थोड़ा सा 15 डिग्री का मूवमेंट है ओनली, उसमें 27 पाउंड का वजन आ गया आपके सर के ऊपर। तो जस्ट इमेजिन 12 पाउंड से 27 पाउंड, ओके, 1 पाउंड इज अराउंड 450 ग्राम। देन 30 डिग्री थोड़ा और आपने बेंड करा तो 40 का पाउंड का वजन आ गया इस सर के ऊपर। आप देखिए 45 डिग्री पे आपने बेंड किया तो पाउंड पे आ गया। आप लेट कर मोबाइल को देखते हैं। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि आप किस तरीके से अपने हेड के ऊपर लोड बढ़ाते जा रहे हैं। 60 डिग्री पे 60 पाउंड। So this is how texting text neck syndrome really develops inside your body. Okay. कैसे पता चलेगा कि हमको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो रहा है या होने लगा है? हम समझ भी नहीं पाते हैं। चीज क्या है, समझने की बात यह है कि हमें अगर ये समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है तो हम रियली उस पर काम करें। पर ये चीजें ऐसी हैं जो कभी हमने सोचा ही नहीं है। ये ऐसी एडवांस्ड डिसीजेस हैं, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, न्यू डिसीजेस आती जा रही हैं। सो आपको ये अवेयर होना पड़ेगा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, द प्रोफेशन इन विच यू आर रियली वर्किंग फॉर आवर्स, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट नो द रिस्क associated, hazards associated on the human health with respect to these particular technological aspects. इसको आप देखेंगे तो शोल्डर में पेन हो सकता है, पेन डाउन हो सकता है, आपको ये पूरा लाइन में इस में स्ट्रेन आ सकता है, गर्दन में स्ट्रेन आ सकता है। ओके, नैगिंग इन द अपर बैक, इस एरिया में पेन आ सकता है कंटिन्यूसली। आपने देखा होगा अगर आप मोबाइल कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको आई में भी स्ट्रेन आता है और ये पूरे एरिया में स्ट्रेन आता है। ओके, स्ट्रेन मीन्स खिंचाव, बैक में भी आएगा। So this is how really works. अब टेक्स्ट नेक सिंड्रोम्स वही जो हमने देखा, कितने डिग्री पे आपको स्ट्रेट रखना है। you may use mobile stand also if you really wanted to work continuously. एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, लास्ट वीडियो, बिकॉज मेरा टाइम अप हो रहा है। I have a lot of material to share with you. But some issues, we have to really limit our session now. लास्ट 2 मिनट का वीडियो है ये, हार्डली 1 मिनट का, 1.5 मिनट का वीडियो। एक ईयरबड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयरबड्स, आप लोग सब लोग हेडफोन यूज करते हो। ओके, हेडफोन जब आप यूज कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी रिस्किंग योर ईयर्स। यू डोंट नो what is hearing impairment. Hearing impairment means कान सुनने की क्षमता कम हो जाना या खत्म हो जाना, और वो सालों लग जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि 6 महीने के अंदर में आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई या रिड्यूस हो गई, आपको आवाज नहीं आने लगती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर द थंब रूल, 60% वॉल्यूम रखना है आपको हेडफोन में। 60% से ज्यादा वॉल्यूम इज नॉट एडवाइजेबल, नॉट अलाउड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिन भर में 1 घंटे से ज्यादा हेडफोन का यूज करना आपके ईयर्स के लिए टोटली डिजास्ट्रस एंड डैमेजिंग होगा। So always remember, try to use speakers whenever you are connecting for various meetings. To use speakers, use mics, don't use headphones. Okay.
एंड देयर आर वेरियस एक्सरसाइजेस आल्सो, वो वीडियोस भी थे मेरे पास, अभी भी हैं यहाँ पे। और एक होता है मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। या आई एम जस्ट एंडिंग माय सेशन नाउ। भालू को उठाओ, भालू को उठाओ। देन वी हैव आई एम जस्ट वाइंडिंग अप माय सेशन। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। हमने समझने की कोशिश करी फ्लिप साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी। We have tried to understand the workplace or computer ergonomics, computer health and safety. Then we have learned about carpal tunnel syndrome, then repetitive stress injury and tendonitis, then computer vision syndrome, then neck pain, that is text neck syndrome, then earbuds and hearing losses, musculoskeletal pain। वह ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें आपने देखा होगा कई लोगों को ये जो माइग्रेन है, ये माइग्रेन भी होता है, और इसके बाद ये जो सर्वाइकल का पेन होता है, यहाँ से लेके ये जो नेक है, नेक से लेके तो ये हैंड तक का पूरा एरिया है, उंगलियों तक का, ये सर्वाइकल का पेन भी आता है। स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है इस एरिया में। तो your posture is very important whenever you work on excessive or long hours on computer or mobile or any sort of digital gadgets. So this is just from my side, and I'm just ending my session because I've been given only 1 hour to speak. अगर आपकी कोई क्यूरीज हो, so you can share with me, you can ask. Yoga is very important with respect to I have stopped sharing my video. Now I'm visible to everybody. Any questions from the forum is open for question and answer session. सर नवल सर, ये चैट बॉक्स में पूछा है किसी बच्चों ने, व्हाट अबाउट? अच्छा, okay, I have not just read. What about cervical herniated disc? See, cervical herniated disc, I am not a medical professional, dear students, but cervical का जो pain है वो it is related with this neck part. Okay, continuously usage, आप जब इस तरीके से मोबाइल लेके ऐसे बैठते हैं continuously, तो ये cervical spondylitis हो सकता है। So you have to really consult the medical professionals. I am not a medical professional. I can just talk about health and safety and environment aspects of workplace or industrial workplace. Okay. Any e-waste management के बारे में भी किसी ने पूछा है। It is very good topic which every electronics इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री जिनको जो काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ई-वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। लेटेस्ट रूल्स हैं जो मैं आपको समराइज कर देता हूं, आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। ई-वेस्ट रूल्स ये बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कोई गैजेट्स हो, सीडीज हो, आपके कार्ट्रिजेस हो, प्रिंटर, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है चीजें हैं, वो सब आप ऐसे थ्रो नहीं कर सकते या आप रद्दी वाले को नहीं दे सकते। ई-वेस्ट रूल ये बोलता है कि all these waste have to be managed by the producer, by the user। तो उन सब की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी एक्टिव ऑन दिस फ्रंट, बिकॉज हमारे इंडिया में ई वेस्ट एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया है। ओके, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक अपने आप में बहुत अच्छा एक प्रोफेशन भी है, जिसको आप लोग एज एन इंडस्ट्री, एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल इस बारे में सोच सकते हो, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अगला कैरियर के लिए जो फ्यूचर पोटेंशियल है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट में, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे ई वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी के। फ्लिप साइड मींस टेक्नोलॉजी के जो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई एडवाइस यू टू हैव रियली व्यू these also trending career technologies। वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी गुड। ई वेस्ट मैनेजमेंट आप
इस पे बहुत अच्छे कैरियर्स ऑप्शंस अवेलेबल है। किसी ने पूछा है ईयरफोन में वॉल्यूम मिनिमम कितना परसेंटेज रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हेडफोन का जो वॉल्यूम होता है आप देख पाते हैं स्क्रीन पे 60%। 60% वॉल्यूम से ज़्यादा आपको हेडफोन, दूसरा हेडफोन अंदर तक घुसाना नहीं है। ओके, हेडफोन 60% से ज़्यादा नहीं खुला होना चाहिए और 1 घंटे से ज़्यादा दिन भर में 24 आवर्स में हेडफोन का यूज़ इज़ नॉट एडवाइजेबल, अलाउएबल, because it will slowly gradually damage your ears. You will be hearing impaired. आपको हो सकता है कि आपको एक कान से सुनना कम हो गया हो, आपने नोटिस ही नहीं किया हो, क्योंकि हम कभी ENT सर्जन के पास जाते ही नहीं है। ओके, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, आपको पता ही नहीं चला 2 साल में आपका ईयरिंग चला जाएगा। 60% से कम वॉल्यूम होना चाहिए, 1 घंटे से ज्यादा हेडफोन यूज नहीं होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मोबाइल है इस मोबाइल को यूज करिए, बट ऑलवेज रिमेंबर योर शुड बी स्ट्रेट। यू शुड टेक रेस्ट ऑफ दिस टेबल, वर्किंग टेबल, एंड यू कैन डू लाइक दिस एंड चैट, और एल्स you can keep one stand here. There are various types of mobile stand, 300-400 रुपए में मिलते हैं। आप मोबाइल स्टैंड लगा लो ना अपने टेबल पे, वो तो बैग में भी रखा जाता है, लैपटॉप के बैग में फोल्डेबल होता है। यू कैन यूज दैट। सो दीज आर सर्टन प्रिकॉशंस जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्यूचर में प्रोफेशनल्स बनने वाले हो, आईटी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बन रहे हो। आपका एक्सेसिव यूज है, और आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम पिछले लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हुआ है। सर सुमित सर खुद शेयर कर सकते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स किन किन को हुई है, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मोबाइल पे ले रहे हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, कंप्यूटर में आंखों में नंबर बढ़ गया, ओके, बैक पेन, लोअर पेन, और ये जो बीमारियां जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, हेडेक्स, तो वो एक नॉर्मल सी चीज है। ये क्यों आ रही है समझने की कोशिश करिए। आपका जो यूज हो रहा है, आप जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूज कर रहे हो, आपकी बॉडी। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्क प्लेस एडवांसमेंट में। अभी इंडिया में वो चीज नहीं आई है, बट अमेरिका में, गूगल में, सब जगह पे स्टैंडिंग डेस्क कंसेप्ट चालू हुआ है। अगर आप लोगों को थोड़ी जानकारी हो तो आप गूगल करके देखिएगा, स्टैंडिंग डेस्क वर्क प्लेस मीन्स ये जो डेस्क जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये डेस्क एडजस्ट हो जाती है, मीन्स इसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है। तो मैं जब चाहूँ अपनी हाइट को इस लेवल पे ले आऊंगा लैपटॉप को, और मैं खड़े होके अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं बार बार बैठ के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टैंडिंग डेस्क बना के रखा हूँ, मैं खड़े होके भी काम कर रहा हूँ, फिर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम के काम कर रहा हूँ। So this is how you can really keep yourself healthy. Okay, so these are certain things which you have to really take care. आइस पेन के बारे में कोई पूछ रहा है कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप ब्लिंकिंग ऑफ आइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइस की एक्सरसाइजेस हैं, गोल गोल आइस को घुमाना। हमारे सुमित सर बहुत अच्छे योगा एक्सपर्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ से रिलेटेड, आई एम ऑल्सो ए योगा प्रोफेशनल एंड ए ट्रेनर. Sumit sir is also yoga professional and trainer, so you can besides parts with respect to your health and various issues you can contact. किसी ने पूछा आई पेन, यस, कंटिन्यूसली याद करिए, मैं खुद कंप्यूटर पे काम करता हूँ। हर आधा पौन घंटे में मैं वॉश बेसिन पे जाता हूँ, ऐसे हाथ में पानी लेता हूँ, एक कटोरी में पानी भरता हूँ, और कटोरी में पानी भर के अपनी आंखों को उस कटोरी में अंदर रख के ब्लिंकिंग करता हूँ, मीन्स बंद खोल के बंद करता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन रियली कूल योर आइज। सी, आइज कंटिन्यूसली अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो एक हीट एनर्जी, हीट रेडिएशन आ रही है आपकी स्क्रीन से, जो कि टेम्परेचर है, वो ड्राइनेस क्रिएट कर रहा है। ड्राइनेस मतलब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपकी आंखें गीली होती हैं, उनका एक पर्पस है, डिफाइंड है। ओके, सो वो ड्राइनेस आने से ही सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। फिर नर्व्स में ड्राइनेस आएगी तो वहां पे सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, सर्कुलेशन रिड्यूस होएगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आगे चल के। यूज स्पेक्टिकल्स टू रिड्यूस आई पेन। माय डियर, स्पेक्टिकल्स तो तब आएगा ना, वो तो तब आएगा जब आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स ना लगे। टेक रेस्ट, डू एक्सरसाइजेस, डू योगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। कोरोना टाइम चल रहा है, बिना योगा के दुनिया नहीं चलेगी अब।
always remember. Okay, so thank you very much, Sumit sir. Hope मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया. I am very sorry, extremely sorry. My dear students, I would really appreciate your cooperation and support for giving me this occasion to speak before you, and you had a very patient listening. I'm really very thankful to you being connected again with the Jabalpur. मेरी पहली कर्म भूमि है जबलपुर. ओके, पहला जॉब मेरा जबलपुर से ही था. So I would really love to be connected with you all again. My name is Naval Neeraj Singh. You can connect me on Facebook, Naval N Singh. सुमित सर के फेसबुक पे आपको मिल जाऊंगा मैं. Okay, so thank you Sumit sir. Thank you all management, senior faculty members and organizers of the conference, and giving me a chance to present really a different topic on a computer. I tried being not a computer expert, not a field of computer. I'm not a computer professional also, but हाँ, I do definitely work on computers, क्योंकि वो तो आजकल किसी भी फील्ड में आपको कंप्यूटर पे काम करना है. So I've tried to give you a very brief insights with respect to the health hazards, which we must really feel कि dormant और आपका जो sedentary lifestyle है वो किस तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आपने खुद आपके आजू बाजू के लोगों को देखा होगा कितनी सारी प्रॉब्लम्स शरीर में होती जा रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण ही हो रही हैं. हमारा तरीका, जिस तरीके से हम काम करते हैं, रहते हैं, रहन सहन, हमारा आचार विचार, आहार विहार जैसा है वैसा ही हमको सामने से निकल के आता है. प्रकृति उसी तरीके से काम करती है. सो थैंक यू वेरी मच सर. सुमित सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. मैं सारे स्टूडेंट्स की तरफ से नवल को थैंक यू बोलूंगा. बहुत बढ़िया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी. जैसे वॉल्यूम कितना रखना है ये भी किसी को भी नहीं मालूम है. लोग वॉल्यूम बढ़ा के सुनना पसंद करते हैं ताकि बीट्स अच्छी सुनाई दे. सो ये सब इन्फॉर्मेशन बच्चों को बहुत काम आएगी, और हेल्दी रहेंगे तभी हम लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाएंगे. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है. यदि हमारी हेल्थ ही मतलब सपोर्टिव नहीं है, हमारी आईज सपोर्टेड नहीं है, हमारे हैंड सपोर्टेड नहीं है, तो हम कंप्यूटर में काम करने में हमको आने वाले समय में जरूर प्रॉब्लम होगी. तो थैंक यू नवल सर, बहुत बढ़िया लगा आपका सेशन. और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा बच्चों की, नवल सर के ने जो टीचिंग करते थे पहले, जब अभी तो इंडस्ट्री में चले गए हैं, सो एक एक क्लास में बच्चे इतने दीवाने होते थे कि बच्चे विंडो से भी पढ़ना चाहते थे, कि विंडो में खड़े होकर सर की क्लासेस अटेंड करते थे बच्चे. वो सिनेरियो हमने देखा हुआ है. रोहित सर ने, हमने, स्वप्निल मैडम ने, सब लोग, हम लोग जब साथ में काम करते थे तो नवल सर की वो क्लासेस देखी हैं हम लोग ने. सर मैकेनिकल ब्रांच से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आपको कंप्यूटर की कितनी बढ़िया जानकारी दी. सो मैं प्रसन्न सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कॉलेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स. प्रसन्न सर. यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल. इनका सर प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा. मैं भी कहना चाहिए कि बहुत प्रभावित हुआ सर. On behalf of the Global Nature Care Sanctans group of institutions, we all are very grateful to you, sir, that you have shared very valuable pieces of information with our students, and your session has been really informative and educative to all the students. Thanks very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much for spending some time for the global organization. Thank you, sir. Thank you very much. Now, dear students, our session 3 is started. 6 papers will be discussed. And this third session for the discussion of research papers will be lasting from 11 o'clock to 12:30. Maybe even after 12:30, this session will be going on, because 6 papers will be published. Okay, 6 papers will be discussed. So we have got a time till 12:30, and after 12:30, students, there will be a plenary session, session number 6, in which Honorable Mr. Sandeep Pandit, sir, from IBM, will be taking his keynote presentation. So for the keynote presentation, you all must remember that this very link will be useful for you. You have to come to this platform through the link which has been provided.
okay, for plenary sessions. And for presentation of the papers, another link will be shared with you in your Google Classroom, I should say in your WhatsApp groups. Isn't it clear? So सुमित सर, हम लीव लेते हैं और फिर प्लेनरी 6 में हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम आपको जी। पेपर प्रेजेंटेशन की लिंक गूगल मीट पर है, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं अभी। आप लोग में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि कैसे पेपर प्रेजेंट होते हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप उनको देखिए। और 12:30 पर यहाँ पर फिर से सेशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 12:15 तक आप फिर से सेम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो अब नेक्स्ट सेशन है वो IBM से सर आ रहे हैं, है ना। तो अगेन आपको एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा आपके लिए। ओके, सो हम लोग व्हाट्सएप पे आपको लिंक शेयर कर रहे हैं। ओके प्रसन्न सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, ओके सर, सर थैंक यू यस सर, ओके सर, सी यू सर, सी यू See you, at 12:30 सर, थैंक यू। ओके।